Ladies and gentlemen, I announce the arrival of our chief guest, Honorable Minister for Water Supply and Sanitation, Government of Maharashtra, Shri Gulabrao Patil ji. माननीय जलापूर्ति तथा स्वच्छता मंत्री श्री संजीव जायसवाल जी, Principal Secretary WSSD Government of Maharashtra, a very warm welcome to you, sir. Shri Abhishek Krishna, Member Secretary MJP Government of Maharashtra, a warm welcome to you, sir. Engineer Pramod Sinha, President IWWA, Engineer Subhash Bhujbal, Chief Engineer MJP Nashik, nominated President-elect, welcome. Engineer Mathai Lagan, Vice President IWWA, welcome to you. Engineer Rajendra Rahane, Chief Engineer MJP Pune. Dr. Dayanand Panse, Secretary General IWWA. Engineer PD Bhamre, Superintending Engineer MJP Amravati, Vice Chairman IWWA. Engineer Vaishali Avte, Organizing SE MJP Nashik, Secretary IWWA, welcome ma'am. Engineer KV Pate, retired Executive Engineer MJP and Organizing Secretary IWWA. Welcome everybody. So very good morning everyone, good morning. On behalf of the Indian Waterworks Association, it gives me, Manasi, immense delight in extending a hearty welcome to all of you, especially the esteemed guests, distinguished dignitaries, and all you invitees present here in inaugural of 55th IWWA Annual Convention. The theme is Sustainable Management of Water and Sanitation, Availability for All. देवी और सज्जनों, इस शानदार समारोह स्थल पर उद्घाटन के लिए मैं मानसी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ. We will commence by welcoming the esteemed dignitaries and guests with bouquets of flowers, beginning with our chief guest, Honorable Minister for Water Supply and Sanitation, is so upfront in taking up their problems and standing by them in times of crisis that he is addressed as the cannon of Khandesh, the fireball, loosely translated from खारान तोफ. अतिशय प्रेमाने आणि आदराने त्यांना ही उपाधी दिलेली आहे जनतेने. त्यांच्या परखड, ठाम आणि तितक्याच स्पष्ट वक्तेपणासाठी आपण त्यांचं स्वागत करूया. मी विनंती करते इंजिनियर सुभाष भुजबळजींना प्रश्नांसाठी त्यांच्या बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज के इस आयोजन में. I request Engineer Rajendra Rahane ji, Chief Engineer MJP, to please welcome Shri Sanjeev Jaiswal ji, Principal Secretary WSSD Government of Maharashtra. Request Engineer Vaishali Avte, Superintending Engineer MJP Nashik and Organizing Secretary IWWA, to please welcome Shri Abhishek Krishna ji, Member Secretary MJP Government of Maharashtra. Engineer Nandu Bhoi will welcome Engineer Pramod Sinha ji, President IWWA. Engineer Nandu Bhoi, Executive Engineer MJP Pune, welcoming Engineer Pramod Sinha ji, President IWWA. And now, Dr. Parag Sadgir, Professor, College of Engineering Pune, will welcome Engineer Subhash Bhujbal ji, Chief Engineer MJP Nashik and nominated President-elect IWWA. Engineer Anand Nampurkar will welcome Engineer Mathai Lagan, Vice President IWWA, with a bouquet of flowers.
Engineer Dayanand Panse, Secretary General IWA, will welcome Engineer Rajendra Rahane, Chief Engineer MJP Pune. Engineer Anil Kulkarni, Retired Executive Engineer, MJP Pune, will welcome Dr. Dayanand Panse, Secretary General IWA. Thank you. Engineer D.D. Malewar, Deputy Engineer, will welcome Engineer P.D. Bhamre, Superintending Engineer, MJP Amravati and Vice Chairman, IWA. Engineer V.S. Rapshetty, Assistant Chief Engineer, will Mrs. Vaishali Avte, Organizing Superintending Engineer, MJP Nashik and Secretary, IWA. And Engineer V.L. Kulkarni, Retired Executive Engineer, MJP Pune, will welcome Engineer K.V. Pate, Retired Executive Engineer, MJP Organizing Secretary, IWA. और अब भारतीय परंपरा के अनुसार दीप प्रज्वलित कर इस समारोह का उद्घाटन होगा. In keeping with the Indian tradition, the inauguration of this function will be done by lighting the auspicious ceremonial lamp. And to do the honors, I request our chief guest, Honorable Minister, Water Supply and Sanitation, Government of Maharashtra, Shri Gulabrao Patil ji, and all the dignitaries seated on the dais to kindly join in. Deepene lokana jayati, deepaste jomaya smritaha, chaturvarga pradodipan of lighting a lamp, and hence a lamp should be lit. As we all are aware, lamp is also a symbol of knowledge, learning and wisdom. दीप ज्ञान का प्रतीक होता है, हम सभी जानते हैं. The lamp. Ladies and gentlemen, Shri Ganesh is the deity in who are vested all knowledge and the arts. Any program begins with an invocation to him. So in order to offer prayers at the feet of the elephant-headed and pot-bellied Lord Ganesha and seek his blessings for an obstacle. Surashreshtham Karanachamara-bhushita Pashankushadharam Devam Vandeham Gananayakam Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kuru me Deva Sarvakaryeshu Sarvada Om Gam Ganapataye Namaha Om Gam Ganapataye Namaha Om Gam Ganapataye Namaha Om Jalabimbaya Vidmahe Neelapurushaya Dhimahi Tanno Varuna Prachodayat. Thank you.
वातावरण बेहद पवित्र शुभ एवं मंगलमय हो गया है. Lord Ganesha, along with the god of water being propitiated, I call upon Dr. Dayanand Panse, Secretary General IWA, and Organizing Committee Vice Chairman, for the welcome address and also to read out the messages by Honorable Union Minister Shri Nitin Gadkari ji, along with the message by Shri Devendra Fadnavis ji, Honorable DCM of Maharashtra. Thank you. Very good morning to all of you. Respectable Honorable Chief Guest Shri Gulabrao ji Patil sir, Cabinet Minister for Water Supply and Sanitation Department, Government of Maharashtra, Shri Sanjeev Jaiswal sir, Principal Secretary, Water Supply and Sanitation Department, Government of Maharashtra, Shri Abhishek Krishna, Member Secretary, Maharashtra Jeevan Pradhikaran, Dr. Hrishikesh Yashod, then the respected President P.K. Sinha sir, President-elect nominated Shri Bhujbal sir, Vice President Mr. Mathia Lagan, Vice Chairman P.D. Bhamre sahib, Honorary Secretary Shri Vaishali Aute and K.N. Pate, and of course Chief Engineer Shri Rane sir, dignitaries on the dais and dignitaries of the dais, and respected past President, Council members, ladies and gentlemen. A warm welcome to all of you to the 55th Annual Convention of Indian Water Works Association. Thanks to each and every one of you for being here together with us. And I want to mention specifically on behalf of myself and on behalf of everyone from Pune Center that we feel extremely proud to be hosting one more convention with all of you in the historical city of Pune. I would like to extend my sincere gratitude to all those who generously came forward to make this convention a big success. Without you all, it wouldn't have been possible. Starting from the year 1968, IWWA convention has become a long way. We have completed 55 years of our journey. It has been an inspirational journey which was started by our beloved founder, D.R. Bise, and all those 36 centers and 12,000 plus members are witness to the strong growth of Indian Water Works Association so far. Last 3 years, world faced ups and downs, and we are not the exception. But with the new normal life, we are coming back on track, and you will experience the confidence exerted by the exhibitors and the delegates who have come in large number, and you will see the progress in next 3 days. I welcome you one and all. Convention has not exclusively been a simple meeting throughout for so many years, but it is practically like a celebration where individuals connect, learn and reclaim with their great deal of information and experiences into the world of water. Today, we have Honorable Chief Guest amongst us, Shri Gulabrao ji Patil, Cabinet Minister, Water Supply Sanitation Department, Government of Maharashtra, and distinguished and dynamic Principal Secretary Shri Sanjeev Jaiswal sir, Shri Abhishek Krishna sir, Member Secretary MGP, Dr. Hrishikesh Yashod, Mission Director, and all dignitaries on the dais who will deliberate with their enriched thoughts and guide us to open new horizon in front of us to achieve the desired success of the event. Welcome you, sir. The speakers will address with their innovative research and presentations. They will present best practices and the case studies during various workshops and technical sessions lined up in next 3 days. A heartfelt welcome to all the speakers and the presenters. These are going to be different presentations and activities which will make the convention a bigger success. And we sincerely expect that none of you will go from here with questions or second thoughts about giving us this opportunity to hold this convention. Thank you, sir. I heartily welcome international delegates, youths, sponsors, and exhibitors who have exerted, and they are pillars of this kind of convention. I am glad to welcome spouses, invitees, and press and media for this event, and all the engineers from all the line departments of different states, as well as particularly from Maharashtra Jeevan Pradhikaran and Jilla Parishads of Maharashtra. Thank you very much.
We have received special messages on this occasion, and I am going to read very few messages out of that. First message we received from Honorable Cabinet Minister, Shri Nitinji Gadkari, from Government of India, Road, Transport and Highways. He has said Indian Waterworks Association, the foremost organization of the water supply and wastewater engineers, is organizing 55th annual convention on 20th to 22nd January 2023 on the theme Sustainable Management of Water and Sanitation, Availability for All in Pune. The convention has national workshops on Jal Jeevan Mission and Amrut, and IWA is organizing special forum for youth to present opportunities in water sector. I am sure the convention will deliberate on the current issues, challenges, solutions for the water sector professionals, and exhibition will showcase advanced technologies. I extend heartiest welcome to the delegates and wish the convention a grand success. And we have received a message from Honorable Deputy Chief Minister of Maharashtra, Shri Devendraji Fadnavis Sahib. He has also expressed Indian Waterworks Association is the foremost organization and of water engineers organizing 55th annual convention from 28th to 22nd January 2023 in Pune on the sustainable management of water and sanitation availability to all. The convention has a national workshops and he has extended his heartiest welcome to all the delegates and wish the convention a grand success. Many people have expressed their greetings and conveyed their message. I will not read because it is already printed in the souvenir which we are going to unveil in some time now. So once again, a warm welcome to you all. Thank you very much. Thank you, Dr. Panse, for the initial introductory remarks. Time now, ladies and gentlemen, for installation of the incoming president by exchanging the medallions. As you will see, Engineer Pramod Sinha, outgoing President IWA, will pin the lapel onto Engineer Subhash Bhujbal, incoming President IWA, followed by exchanging of the medallions and exchanging of seats thereafter. We all are witness to the exchanging of medallions as it is happening live in front of us. What you can see is the pinning of lapels for all those seated at the rear end. So heartiest congratulations to Engineer Subhash Bhujbal on becoming the President of IWA. Let us give it to him one time. Yes, thank you for that applause, ladies and gentlemen. Moments to be treasured in the form of photographs? Yes. Many congratulations once again. And I will request Engineer Pramod Sinha ji, outgoing President IWA, for his address. Sinha ji. Respected Chief Guest, Shri Gulabrao Patil Sahab, Honorable Minister, Water Supply and Sanitation, Maharashtra Government. Dignitaries on the dais
and dignitaries who are sitting off the dais, ladies and participants. A very good morning to you all. I wish you all a very happy and prosperous new year, a year full of opportunities. At the outset, I congratulate organizing committee of Pune Center and entire team in the 55th convention in cultural capital of Marathas. It is heartening to see a congregation of water leaders and other stakeholders to exchange knowledge for collective action and solutions in tackling the challenges in water and sanitation sustainability. Sir, it was affection and confidence of council members of IWA who bestowed me the responsibility of prestigious post of President in 54th Convention at Lucknow. Under the shadow of COVID-19 at Lucknow Convention, we initiated path-breaking new approaches like online registration of delegates, beside many other web-based activities to organize COM meeting and convention in hybrid mode. The entire convention was live streamed and was watched remotely by many members who got an opportunity to participate. In spite of the looming threat of COVID, it was a successful convention. With the support of all, especially General Secretary Dr. D.B. Panse, Engineer A.K. Gupta, Director Technical, and Editor Dr. M.L. Agarwal, the year 2022-23 was full of activities at both headquarters and various centers across India. Sir, in pursuit of our aim and objective, we organized number of international seminars, national seminars, technical lectures, seminars and workshops, webinars, training programs, field and site visits at various centers, mostly in physical mode. In all, we could organize a total of 139 programs in a year, leaving aside holidays. On an average, every alternate day, IWA was doing some program related to water. If I take this opportunity to name few programs which I personally witnessed, it would be World Water Day attended by nearly 700 delegates with focus on success stories of Gujarat water supply by the Ahmedabad Center on 26th March 2022. Second one is National Seminar with reference to challenges in Jal Jeevan Mission held at Bhopal on 29 July 22. National Seminar on Protection, Preservation and Conservation of Water Bodies held at Indore on 24 September 2022. National Seminar on Drinking Water, Urban Drinking Water Security with a special reference to 24/7 water supply in entire Puri city at Bhubaneswar on 29th October 2022. National Seminar on Water Sanitation and Climate Change at Lucknow on 10th December. Sir, all these programs were delivered by eminent personalities with great source of knowledge dissemination. As you all know, IWA has collaborated with international associations. I, along with some office bearers, attended Singapore International Water Week 2022 between 16th to 21st April on a special invitation from Public Utility Board, Singapore. We had the opportunity to address India Business Forum. An international conclave virtual mode by Nagpur Center and international virtual conference by Bengaluru Center were successful with good attendance from many parts of the world. During this tenure, some major accomplishment was made for the organization, sir. IWA, our website was static and outdated, which needed revamping and refurbishing.
This was started so that every activity in the functioning of IWA could be undertaken through a dynamic and resilient to user-friendly website. With the wholehearted support from council members, the work of revamping of website is completely completed, which is going to be formally opened at the hands of the Honorable Minister, sir. Once the new website is fully operational, the working of IWA will be almost paperless. I am really indebted to all those who made this task possible. And their work to mention this period. During this period, a new center at Meerut has been opened on 5th June 2022 to enhance the activities in North India. The center is performing well, and within 6-month period, they have organized few excellent technical lectures and couple of much needed training program for assistant engineer and junior engineers implementing Jal Jeevan Mission and Amrut. A director from NMCG Government of India also graced the program, and the feedback was very good. I am happy that members of IWA have also increased and crossed 13,000 marks now. Sir, water is finite, population increases and urbanization is bound to happen. Demand-supply mismatch is inevitable. Therefore, sustainable water management is the only option. Coordination between different water uses, water use efficiency in agriculture, reduce, reuse, recycle, NRW reduction, circular economy, grey water management, groundwater management are the techniques which are to be adopted. Public participation is now most important. Sir, many public health engineers are sitting here who have a very important and challenging role ahead to complete the flagship program of Jal Jeevan Mission and Amrut 2.0 in stipulated time with desired water quality to make the program sustainable. In Maharashtra itself, about 18,000 villages remain where work under JJM is yet to start. I feel the prestige of PhD engineers is at stake, but at the same time, they have the opportunity to prove their worth. I am pretty sure they will do it. Indian Waterworks Association has a large pool of human resources to handle any type of technical support to the massive program of water sector pan-India. Be it policy advice or implementation support, capacity building and training support, or knowledge support, IWA has the capacity to contribute to the noble cause and provide support to the government in public interest. I take this opportunity to congratulate Engineer Subhash Bhujbal, Chief Engineer MJP, the incoming President of IWA, who is a bright engineer, and I am confident that he will lead to the organization to a greater height. With thanks to you all for patient hearing, I wish the convention a great success. Thank you. Thank you, Synergy, for giving us an overview of the 3-day convention and also for telling us about the varied activities taken up. I will say a few words in honor of Engineer Subhash Bhujbal, President, IWA. He is presently working as a Chief Engineer in Maharashtra Jeevan Pradhikaran Nashik region, joined MJP as an Assistant Executive Engineer Group A selection through MPSC Engineering Services, worked in Tata Consulting Engineers and Mazgaon Docks Limited, Mumbai, which is a PSU under Ministry of Defense, served as an Assistant Garrison Engineer Group A in Military Engineer Services selection through UPSC Engineering Services, India. He is a postgraduate from Indian Institute of Technology, Powai, Mumbai, has immense experience in planning, designing, and execution of various civil engineering projects. He has carried out an appraisal of water supply, underground sewerage, stormwater drainage, and solid waste management projects under various programs. He has experience in operation and maintenance of large water supply systems. He has served at CPHEEO, New Delhi,
was a part of many government committees in the position of chairman and also as a member, visited many foreign countries as a part of government delegations, contributed in the framing of technical and policy guidelines for the Water Supply and Sanitation Department and Urban Development Department, Government of Maharashtra, served as a member of the Bureau of Indian Standards Subcommittee, President Maharashtra Water Supply and Sewerage Engineers Association, currently executing 222 JJM projects close to rupees 7,000 crores. With those words, I will invite Engineer Subhash Bhujbal, President IWA, to address us all. Chief guest, respected Gulabrao Patil Sahib, Honorable Cabinet Minister, Water Supply and Sanitation Department, Government of Maharashtra, guest of honor, respected Sanjeev Jaiswal sir, Principal Secretary, Water Supply and Sanitation Department, Maharashtra, respected Abhishek Krishna sir, Member Secretary, Maharashtra Jeevan Pradhikaran, immediate past President, Engineer Sinha Saab, Vice President Shri Laganji, Honorary Secretary General Dayanand Panseji, Chief Engineer MJP Pune Rahane Sahib, Secretary Organizing Committee PD Bhamre, Vaishali Aute and KN Pate, dignitaries on the dais and off the dais, respected past presidents, respected council members, ladies and gentlemen, very warm good morning. I wish you all a very happy, healthy and prosperous New Year 2023. At the outset, I extend my wholehearted welcome on my behalf and on behalf of IWWA to our chief guest, Shri Gulabrao Patil Sahib, Honorable Cabinet Minister, who has kindly consented to be with us on this occasion, the 55th annual convention of this august great organization of water sector professionals of our country, IWWA. I warmly welcome all guests of honors, Shri Jaiswal sir, Shri Krishna sir, Rahane Sahib, fellow delegates, exhibitors, all the international delegates, speakers, spouses in the historical city of Pune. I express my deep gratitude to Water Supply and Sanitation Department, Government of Maharashtra, Maharashtra Jeevan Pradhikaran, Jal Jeevan Mission Directorate Maharashtra, and UNICEF, all the companies, organizations, delegates who have wholeheartedly supported this convention, which has enabled us to organize this event of this magnitude. A very special welcome to young and aspirant water professionals who have come from many states of India and across the Maharashtra in a very big number. It is my privilege to speak in front of you as the President of IWWA. I am humbly thankful to the Council of Management for this privilege. IWA is now in 60s and growing across the country through its 36 centers, having a strong membership of 13,000 plus. The youth membership of IWA is growing and now stands at 1,200 plus. With a great sense of responsibility and in all humility, I am assuming the office of the President of this prestigious organization. I sincerely hope that I would be able to add to the values of IWA association created by my predecessors. It is a coincidence that 55th annual convention and G20 summit under India's leadership started its meeting of various groups, and one of the group is infrastructure group. The first meeting of our countries of G20 is happening in Pune back to back with our convention.
We are thankful to Pune Municipality Corporation for beautifying the city just before our event. We are very much thankful to G20 Summit organizing committee to have chosen one of the thematic area, which is infrastructure. Here, I want to focus on infrastructure, which is the foremost priority and of utmost importance for sustainable water and sanitation management to ensure that no one is left behind. We, the water sector professionals, are always struggling with numbers, goals, and targets. Only a couple of months back, United Nations announced that we have reached 8 billion population, the rise of 1 billion just in 12 years. A quick reference to the other numbers reveals that India's population is 141.22 crore and the rise of 78 lakhs in just 8 to 10 months. During the era of Million Development Goals, we were struggling to give services of water and sanitation to all as targeted in MDG. The said MDGs came to an end by 2015. We could reasonably have success in providing water, but could not provide sanitation to 2.6 billion worldwide. Then come Sustainable Development Goals, particularly referring to SDG 6, the target calculated by World Health Organization, UN, as on November 2022, that we need to provide safe sanitation to 3.6 billion by 2030, which to in next 7 years only. A steep challenge on the backdrop of climate change, population growth, and rapid urbanization. About the climate change, we all are experiencing droughts, wet spells, flooding, cloudbursts, and disasters. Population growth, I already touched upon. Rapid urbanization is another major worry. Already, the global urban population will be 50% very soon. However, one very disturbing fact is that it is happening in only 3% of landmass. A serious challenge for urban planner in the planning of infrastructure facilities. An important infrastructure is water and sanitation infrastructure. We have to plan for it, keeping in mind the sustainable aspects like economically viable, technically suitable, locally acceptable, and environmentally sustainable. This leads to us necessity of sustainable management to ensure that it is for all and no one is left behind. SDG 6.1 and 6.2 are about providing universal access to drinking water and sanitation. With the success of HBM, we have been successful in providing toilets to every household in the country and making India open defecation free. It was a leap forward by us in sanitation. Now, with the launch of Jal Jeevan Mission and Amrut 2, we will be taking a leap forward in providing universal access to drinking water by providing tap connection to every household in India. The focus of Amrut 2 is not only making available water to every household, but making it available 24/7. The journey has already begun, and my friends present here know that it will be a journey of lifetime, exciting and adventurous. I am sure we will successfully reach our destination by year 2024, and there will be water in every household of India. Here in Pune, we have made an elaborate arrangement for the convention. We are trying to have a good discussion on technical and governance aspects of water. There are various workshops and sessions have been scheduled. There is a 142 stall exhibition with the latest technology and product on display. The convention is not only loaded with technical content, but we have arranged very good food and entertainment as well. On behalf of organizers, I request all of you to please participate and enjoy the convention. As a president of IWWA, I will see that IWA has a better dialogue with governments and other sector organizations in the world. This will be mutually beneficial to each other.
IWA members are actually a sea of knowledge of the water sector. If tapped and diverted in right direction, it will prove immensely beneficial to society at large. We will publish a handbook or policy paper and the operation and maintenance of rural and urban water supply systems. As of now, different states in India have different O&M policies for water supply systems. There is no uniform policy or guidelines on this very critical aspect of drinking water supply. After providing Har Ghar Jal, the challenge to sustain it will begin. We should be ready to face this challenge, and in doing so, IWA can play a role in preparing policy paper and conducting training sessions. We will have at least 20 utility members. We will try to establish a dialogue among utilities in India. IWA can certainly play a role in connecting or bringing utilities on one platform. Efforts can also be made to open a dialogue with some good water utilities in other countries also. The utility director and director international of IWA will have to play a great role here. Ever since its formation, IWA is growing at a steady pace, adding more and more centers and members every year. Meerut Center, which has been opened only a few months back, is doing phenomenal job by organizing various programs regularly. I take the opportunity to appreciate the efforts being taken by Meerut Center. In the coming year, we will try open at least 2 new centers in India. These are the tasks set out for me by myself, and I believe that with the support of Honorable Principal Secretary, Honorable Minister, Honorable Member Secretary, respected past presidents, respected COM, delegates, I will able to fulfill on it. Once again, thank you very much for giving me the opportunity to serve as a president of IWA. Thank you very much. I wish you all of you a great convention at Pune. Jai Hind. Thank you, Subhashi, for putting IWA's journey in a nutshell for all present. Also for telling us about the various schemes of the government, accomplishments and the major milestones. Thank you आणि तुमचं पुन्हा एकदा खूप खूप अभिनंदन. मी माननीय मंत्री महोदयांना विनंती करेन की त्यांनी सोव्हिनियरचं अनावरण करावं आणि तत्पश्चात संकेतस्थळाचं लॉन्चिंग देखील करावं. I request our Chief Guest, Honorable Minister for Water Supply and Sanitation, Government of Maharashtra, Shri Gulabrao Patil ji, to unveil the souvenir of the 55th IWA Convention. This, ladies and gentlemen, contains articles, messages from honorable ministers, well-wishers, and also advertisements from our sponsors and exhibitors. यादगार पल हम सभी के लिए कैद हो रहे हैं फोटोग्राफ्स के रूप में. Thank you. And now I will request the Honorable Minister to launch the new website by clicking the button. We have Shri Amardeep Sharma joining us on stage. Ladies and gentlemen, he is the person who has designed this new website, which will be now launched by the Honorable Minister, Shri Gulabrao Patil ji. तालियों की गूंज के साथ हम इस पल को सजाएंगे. अविस्मरणीय क्षण हम सभी के लिए.
We can see a few pages scrolling down from the website. Thank you so much. Bahut bahut shukriya. Time now, ladies and gentlemen, for presentation of awards. And I hand over the charge of this particular segment to Dr. Dayanand Panse, Secretary General, IWA. Please take over. थँक्यू साहेब. संकेतस्थळ हे खूप महत्त्वाचं आहे. नवीन डिझाईन केलेलं आहे आम्ही या निमित्ताने. Thank you. It is a customary practice that during the annual convention, we felicitate all the outstanding people and engineers of the sector who have done exemplary work for their services and in their businesses and all. So we give them the awards and prizes at the hands of the chief guest and guest of honor. So there are plenty of prizes. In fact, it's more than 20 prizes and certificates to the sector engineers and youths and lady engineers and all. But then we will be giving 5 or 6 in this ceremony. So first is S.K. Shah Memorial Shield. This shield is donated by Satyamangal Shah and Mahavir Shah. This is given to the center who have done exceedingly well in the maintaining the center, conducting various technical programs. They have increased the memberships, they have done seminars, symposiums, workshops and all, and national as well as international training courses. Also they have, as said by Bhujbal sir and Sinha sir, they have done the celebration of World Water Day, World Environment Day, Water Resources Day and all. The prize consisting of revolving trophy and a shield, a certificate and a memento. And this year this award goes to Mumbai Center. Let us welcome them with big hands. I request Gulabrao Patil sahib to give them and guest of honor also. पुणे सेंटर है, पुणे सेंटर के लोग Thank you Mumbai Center and heartiest congratulations to you all. Thank you. Next is Dr. Bise Memorial Shield. This shield is being given to a center in memory of our beloved founder Dr. Bise, president of the association. Then it is given to a center which enrolls highest number of members during any year, and prize contains of shield, certificate and memento. And this year this prize goes to Pune Center. So I would like to ask Pune Center people to come in a big number and accept the shield at the hands of the guests.
निर्मलता ब्रिज नंदन घेतो मी. Thank you. The Jal Nirmalta Puraskar, this is one of the prestigious award of the association initiated by Water Laureate Dr. M.A. Chitale, a Stockholm Water Prize winner. It is intended to honor the individual or institution that have made significant contribution to the project and to enhance and preserve the water quality of India's water resources. This Puraskar is given from the donation given by Dr. Chitale in the year 1995. The Puraskar consists of cash prize of rupees 10,000, a memento and a citation. This is customarily given during the convention. A citation is also given mainly to the individual or institution who has made substantial contribution in the field of science, engineering, water management and social mobilization, particularly in improving the quality of water. The main focus of the contribution should be protection, enhancement and preservation of quality of India's water resources. Prize consists of trophy, certificate and a citation. And this year award has been given to Mr. Anil Kumar Gupta of Lucknow Center. I will request Anil Kumar Gupta ji please come on dais. Please be here. I will read the citation. The Indian Water Works Association gives the prestigious award every year during the annual convention to an individual, Indian national or institution for the significant contribution made towards the improvement in the quality of water to be used for the human consumption. The award has been instituted by the world-renowned water engineer Dr. M.A. Chitale, who made generous contributions to IWA. The contribution by the winner of the award can be in the field of science, engineering, management, social mobilization in the form of development of new techniques, implementation of project. Born in November 18, 1960, Engineer Anil Kumar Gupta has a distinguished engineering career, and he did his BTech in civil engineering from the Kanpur and MTech from IIT Kanpur in securing CPM 9.82 out of 10. Gupta has also written several technical papers published in journals and presented in seminars and conventions. He received SP Unwala Award Prize. So thank you and congratulations to Mr. Anil Kumar Gupta. Next is Brijnandan Sharma Award. This prize is given from a donation by Brijnandan Sharma and is given every year to a young energetic engineer who has less than 40 years and who has outstanding career and also been done outstanding work for our Indian Water Works Association. Nominations are invited from young engineers in their respective centers. The candidates are required to submit their biodata in detail, giving information about the work done by him or her for the IWA and also for the commendable work done in the career. This year award goes to Pallavi Rai from Lucknow Center. Thank you, sir. There is one more award that is in IWWA's Jal Seva Puraskar. This award is given from the donation received from Dr. J.M. Barrot from Baroda and is given to an engineer who has done commendable work towards promoting the sustainability of water supply systems during last 3 years. And this year award is given to Professor Dr. Parag Sadgir from Aurangabad Center. Parag Sadgir, sir. Thank you. Association Face is our technical journal which is published every quarter, and there is Dr. M.L. Agrawal who has been doing this work for last 2 years, and association would like to felicitate him
for doing this excellent work for publication of the quarterly journal, technical journal. So I request Dr. M.L. Agrawal to receive certificate of appreciation at the hands of the guests here. Thank you all awardees and congratulations, and I hope this will be an inspiration to all other engineers in coming years to be aspirant to take the awards. Now I will hand it over back to Manasi. So let us have a resounding of claps for all the awardees. सभी पुरस्कार्थियों को ढेर सारी बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं. I will now request Engineer Rajendra Rahane, Chief Engineer MJP Pune, to address the audience. All right, in the interest of time, we're just skipping his speech and let us move on. I invite guest of honor, Shri Abhishek Krishna, Member Secretary, MJP, Government of Maharashtra, to address us on this significant occasion. Sir. मंच पर उपस्थित आदरणीय मंत्री पानी पुरवठा श्री गुलाबराव पाटिल सर, मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रधान सचिव पानी पुरवठा श्री संजीव जायसवाल सर, श्री प्रमोद सिन्हा जी, श्री सुभाष भुजबल जी, श्री मिथियालंगन जी, यदि मैं नाम सही बोल रहा हूँ तो, मंच पर उपस्थित बाकी सभी मान्यवर और सामने बैठे मित्रों, आईवा को मैं उनके 55वें कन्वेंशन पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। श्री सुभाष भुजबल जो हमारे महाराज जीवन प्राधिकरण के मुख्य अभियंता हैं, उन्होंने आज अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है, मैं उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उनकी और मैं उम्मीद करता हूं कि इसका असर महाराज जीवन प्राधिकरण पे नहीं पड़ेगा, मतलब अध्यक्ष का कार्यभार भी चलेगा और जल जीवन मिशन भी चलेगा साथ साथ। जब भी हम सरकार में अभियंता की बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले पीडब्ल्यूडी, उसके बाद इरिगेशन ही आता है, लेकिन इस विभाग में आने के बाद मुझे ये एहसास हुआ है कि सरकार में जो सबसे महत्वपूर्ण अभियंता आज के दिन में अगर कोई है तो वो जलापूर्ति और मल निस्तारण से संबंधित अभियंता है। इस देश को आज सबसे बड़ी ज़रूरत, यदि सोशल इम्पैक्ट, और ये सोशल इम्पैक्ट जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट में भी बदल सकता है, इस देश को सबसे बड़ी ज़रूरत अपने जल के ऊपर फोकस करने की, उसके ऊपर ध्यान देने की है। यदि स्वच्छ जल मिलेगा तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो लोगों के पैसे खर्च कम होंगे, आयु बढ़ेगी, बाकी की समस्याएं कम होंगी। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश बहुत सालों तक इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभी जो जल जीवन मिशन और अमृत का कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में शायद एक समय ऐसा आए, जैसा कि मैं हॉलीवुड की फिल्में जब मैं देखता हूँ तो वो अपने किचन के सिंक से नल खोल करके पानी लेते हैं और पी लेते हैं। शायद एक समय ऐसा आएगा कि भारत में भी हमें किसी आरओ या यूवी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम किचन के नल से ही सीधे पानी पी सकते हैं, पी लेंगे।
मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मुझे फिर से जल जीवन मिशन के वर्कशॉप में बोलना है, तो मैं उस समय जल जीवन मिशन के बारे में बोलूँगा। आईवा और महाराज जीवन प्राधिकरण का पुराना संबंध है। महाराज जीवन प्राधिकरण के बहुत से अभियंता आईवा के सदस्य रहे हैं, अभी भी हैं। कई अभियंता अध्यक्ष का पद भी उन्होंने ग्रहण किया है। मुझे उम्मीद है कि ये जो कन्वेंशन आयोजित किया गया है, इसमें विचारों का आदान प्रदान होगा और इस विचारों के आदान प्रदान से जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें हम उसका असर देखेंगे। मैं फिर से आईवा को धन्यवाद देता हूँ, आभार मानता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, यहाँ पर बुलाया, बोलने का मौका दिया। मैं श्री भुजबल जी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ आगे के कार्यभार के लिए। आप सभी का आभार, धन्यवाद। आज के इस अहम अवसर पर उपस्थित सभी को संबोधित करते हुए आपने बड़े संक्षेप में अपने बहुमूल्य विचारों की सौगात हमें दी। बहुत बहुत शुक्रिया। I will now request our guest of honor, Shri Sanjeev Jaiswal ji, Principal Secretary, WSSD, Government of Maharashtra, to address this august gathering. आईवा 55 ॲन्युअल कन्व्हेन्शनच्या या कार्यक्रमसाठी उपस्थित असल्याने या कार्यक्रमच्या उद्घाटक व आपला माननीय मंत्री महोदय श्री गुलाबराव पाटील जी, या कार्यक्रमसाठी उपस्थित असल्याने माझा सहकारी श्री अभिषेक कृष्णा जी, आईवाच्या आउटगोइंग प्रेसिडेंट श्री प्रमोद सिन्हा जी, ज्यांच्या नुकतेच नवा प्रेसिडेंट म्हणून त्यांनी कारभार स्वीकारलेला आहे ते आपला सुभाष भुजबल जी, आईवा का वाइस प्रेसिडेंट श्री मलिगथरन जी, पानसे जी, राहने जी, आवते मैडम और व्यासपीठ पे जितने भी मान्यवर हैं और इस कन्वेंशन के लिए यहाँ उपस्थित देश भर से आए हुए सब सम्मान्य सदस्य और प्रतिनिधि और मीडिया के सब दोस्तों, सही में अगर देखा जाए तो आज का ये जो कार्यक्रम है आपका बहुत ही इंटरनल कार्यक्रम है, क्योंकि यहाँ पे आपके एक आउटगोइंग प्रेसिडेंट और एक न्यू प्रेसिडेंट का सत्कार और उनका ये किया गया है। और ख़ास करके अभी अगले 2 दिन में बहुत ही विषय पे यहाँ पे चर्चा होगी, बहुत सारे विषय पे आपकी जो टेक्निकल नॉलेज है उसका एक्सचेंज के द्वारा अलग अलग थीम्स और अलग अलग विषय के संदर्भ में कुछ जानकारी सबको दी जाएगी और मुझे आशा है कि उस जानकारी को लेके डेफिनेटली इस कन्वेंशन का जो हेतु है वो पूरा होगा। मेरे सहकारी अभिषेक जी ने बहुत ही सही मुद्दा उपस्थित किया कि आज के दिन में अगर जैसे पुराने काल में था कि बांधकाम विभाग हो या जल संपदा विभाग हो, माने PWD या इरिगेशन, इसकी जो महत्व थी उससे ज़्यादा महत्व अब पानी क्षेत्र में काम करने वाले सब अभियंता और इंजीनियर्स की है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पानी की उपलब्धता यही सबसे बड़ा चैलेंज है। और दूसरा उससे जो जुड़ा हुआ सवाल है कि पानी की डिमांड। मैं घड़ी घड़ी कहता हूं कि आने वाले दिन में इस सेक्टर में काम करने वाले लोगों को ये दोनों पहलू पे काम करना पड़ेगा। एक तो सप्लाई कैसे इंक्रीज किया जाए और दूसरा जो है कि डिमांड को संदर्भ में उसकी या तो कमी करना या उससे ज़्यादा जो अपन बोलते हैं कि रीयूज रिसाइकल का पानी का वापर इंक्रीज करना। और इसीलिए ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल में अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ये दोनों ही मुद्दा को एक साथ जोर दिया गया है। सबको मालूम है कि हमारे पास भले ही समुद्र है, लेकिन आज भी समुद्र के पानी को डिसैलिनेशन के द्वारा ड्रिंकिंग वाटर के लिए पोर्टेबल बनाना
अभी एक हाई एंड टेक्नोलॉजी और उसकी रनिंग कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से उसकी अभी भी उतना भारत में उसकी वापर या उसकी यूज़ नहीं शुरू है, और शायद ये कोस्टल एरियाज़ में ही ये शक्य रहेगा। इसलिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना केंद्र सरकार ने और हमारे देश के माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन के स्वरूप में इस देश को दिया है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले सालों में जल जीवन मिशन का जो हेतु है कि हर एक गांव में, हर एक घर में 55 लीटर पानी, स्वच्छ पानी सबको उपलब्ध हो, ये ध्येय से जो ये योजना की जिस तरह से कारोबार पूरे राज्य में और पूरे देश में चल रहा है, मुझे बहुत ही इस पे उम्मीद है कि इससे आने वाले सालों में डेफिनेटली वाटर सिनेरियो इन द रूरल एरियाज में एक बदल आएगी। लेकिन ये कहते हुए मेरे सामने ये भी एक प्रश्न आता है कि इसके पहले भी योजना बनाए गए, वो अलग अलग नाम पे बनी गई, NRDWP के नाम पे हो, राष्ट्रीय पेयजल हो, स्वजल धारा हो, उसके बावजूद आज भी हम इतने साल के बाद पीने का पानी ग्रामीण एरिया में देने के बारे में या शहरी भाग में देने के बारे में बात कर रहे हैं। इसका कुछ ना कुछ विश्लेषण होना बहुत ही जरूरी है। पहला विश्लेषण तो ये है कि योजना जब हम बनाते हैं तो उसकी जब हम डिजाइनिंग 30 साल के हिसाब से करते हैं पॉपुलेशन को पकड़ के, तो वो योजना किसी भी कारणवश, पहले मैं टेक्निकल कारण पे जाऊंगा कि एग्जीक्यूशन फ्लॉस के वजह से वो योजना बंद पड़ जाती है। या तो सोर्स सही आइडेंटिफाई किया नहीं जाता है, जिस वजह से जिसके द्वारा उस योजना में लोगों को पीने का पानी दिया जा सकता है, वहीं पे पानी कम हो जाने के वजह से वो योजना डिफंक्ट होती है। दूसरा जो है कि योजना की एग्जीक्यूशन करते वक्त जिस तरह से पाइप का लेइंग होना चाहिए, जिस लेवल पे होना चाहिए, उसके वाल्व्स हो, WTP हो, फिल्टर प्लांट हो, ये सब जो अलग अलग घटक है, ये अलग अलग घटक पे किसी भी वजह से काम की दर्जा क्वालिटी योग्य न होने के वजह से योजना बंद हो जाती है। और जो तीसरा सबसे महत्व का मुद्दा है वो है कि वो योजना की जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है, जो उस योजना की देखभाल और दुरुस्ती पे होने वाला जो खर्च है, वो खर्च का जो पानी पट्टी या वाटर चार्जेस अपने को लेना चाहिए, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, जिला परिषद हो, या शहरी भाग में नगर परिषद या नगर पंचायत या महानगर पालिका हो, उसमें एक गैप रहता है और उस वजह से वो योजना बंद हो जाती है। कहने का तात्पर्य यही है कि अलग अलग कारण से योजना चालू होने के बावजूद योजना बंद हो जाने का भी अनुभव इस देश में है, और जिसका टीका टिप्पणी जो है वो हमेशा अभियंता या इंजीनियरिंग क्लास पे पड़ती है। योजना बंद होता है तो लोग कहते हैं कि किसने ये योजना का डिजाइन किया था, ये योजना का एग्जीक्यूशन किसने किया, कॉन्ट्रैक्टर कौन था, इंजीनियर कौन था, उस पर जवाबदारी निश्चित की जाए। लेकिन जो मूल मुद्दा मैं आपके मार्फत, और मैं उम्मीद करूंगा कि अगले 2 दिन में इस पे चर्चा होना चाहिए कि हाउ टू मेक द स्कीम सस्टेनेबल शुड बी वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस कन्वेंशन। योजना कायम स्वरूप उसके जो भी 30 साल 50 साल की जो भी उसकी उम्र है, उस पूरे दरमियान में वो योजना कैसे एक सक्सेसफुल तरीका से, यशस्वी तरीका से चल पाएगी, इस पे भी ध्यान देना उतना ही ज़रूरी है जितना कि योजना का डिज़ाइन करना और इम्प्लीमेंट करना। आज जैसे ग्रामीण एरिया में जल जीवन मिशन है, उसी तरह से शहरी भाग के लिए अमृत योजना है वह, और अमृत योजना में भी भले ग्रामीण में 55 लीटर हम कह रहे हैं, लेकिन अमृत के अंदर में साधारणपना से 135 लीटर पर कैपिटा पर डे पानी देना अपेक्षित है। बट शहरी भाग में जो प्रॉब्लम्स है वो अलग है। मैं खुद बहुत सारे कॉरपोरेशन का आयुक्त रहने के वजह से मैं इस पे कह सकता हूँ कि शहरी भाग के जो नए एरियाज आते हैं, जो अपन बोलते हैं पेरिफेरी, आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क शहरी एरिया में काम करने के लिए, अब जैसे मुंबई जैसे शहर में अगर कहीं पे खोदकाम करना हो तो नीचे खोदने के बाद में इतने सारे यूटिलिटीज़ है कि उनको ही फेस करना एक अपने आप में एक चैलेंज है, एक आह्वान है।
बट फिर भी हमारे इंजीनियर्स इस क्षेत्र में उत्तम काम कर रहे हैं। योजना देने के बाद, चाहे वो शहरी हो या वो ग्रामीण हो, जल जीवन मिशन हो या अमृत हो, अगर उस योजना का जो डिजाइन है वो डिजाइन को सही मायने में इम्प्लीमेंट किया जाए तो मुझे लगता है कि इस देश का चित्र बदल सकता है पानी क्षेत्र के बारे में। दूसरा जो महत्व का है वो है आपका वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। 80% पानी जो हम यूज करते हैं वो वेस्ट वाटर में कन्वर्ट होता है। ग्रामीण एरिया में आज तक कभी भी हम वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, जिसको हम बोलते हैं ग्रे वाटर मैनेजमेंट, इसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था। लेकिन अब स्वच्छ भारत मिशन टप्पा 2 के अंतर्गत ग्रामीण एरिया के ये ग्रे वाटर को किस तरह से ट्रीट किया जाए, चाहे वो ट्रेंचेस के द्वारा हो या चाहे वो सोक पिट के द्वारा हो, जहाँ पे आपकी टॉयलेट्स है वो टॉयलेट्स को सिंगल पिट से ट्विन पिट करना हो, सेप्टिक टैंक अगर बना है तो सेप्टिक टैंक के साथ में एक सोक पिट देना। और अगर बड़े गांव है और वो गांव अगर शहरी भाग से लगे हुए हैं तो जो हम बोलते हैं कि वहाँ का फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्रोग्राम होना चाहिए, जैसे कि वहाँ का जो फीकल स्लज निर्मित होती है वो शहरी भाग के जो भी एसटीपी या एफएसटीपी है वहाँ जाके उसकी ट्रीटमेंट किया जा सकती है। उसी तरह से शहरी भाग में आमतौर पे जो नदी नाला प्रदूषण होने का प्रमाण बढ़ता है उसका कारण यही है अनट्रीटेड सीवरेज। और अनट्रीटेड सीवरेज जो है वो जाके यहाँ पे बाकी उसके वजह से हेल्थ इश्यूज होती है। मैं बहुत जगह पे प्लानिंग में ये देखा हूँ कि हमारी यंत्रणा को, चाहे वो इंजीनियर्स हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो या चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर्स हो, हमारी फोकस हमेशा कैपिटल इंटेंसिव स्कीम्स पे रहती है। अगर हम सीवरेज ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे तो हमारी फोकस रहेगी एसटीपी बनाना, वो मेन ट्रंक सीवर लाइंस ले करना, बट हर एक हाउस होल्ड को वो मेन ट्रंक सीवर लाइन से जोड़ना, खास करके जहाँ पे शहरी एरिया में स्लम्स हो, झोपड़पट्टी हो, उसके बारे में उचित ध्यान न देने के वजह से बहुत सारे रूलिंग्स में एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ये ऑब्जर्वेशन दिया है कि एसटीपी कैपेसिटी इंस्टॉल्ड इन द कंट्री इज अंडर यूटिलाइज्ड। माने एक तरफ सीवरेज है, दूसरा तरफ एसटीपी प्लांट्स है, बट फिर भी वो एसटीपी प्लांट्स की अंडर यूटिलाइजेशन होती है, तो ये कहीं ना कहीं प्लानिंग में गलत है। मुझे आशा है कि अगले 2 दिन में इन सब विषय पे, चाहे वो ग्रे वाटर मैनेजमेंट हो, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर हो, चाहे वो हाउस होल्ड कनेक्शन हो, उसके बारे में जो चैलेंजेस है, फीकल स्लज ट्रीटमेंट हो, ग्रामीण एरिया की ओवरऑल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो, जो क्लाइमेट चेंजेस के बारे में अभी हम नए तौर पे एक सर्कुलर इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंजेस जो सीओपी के द्वारा में हम बोल रहे हैं, उन सब माध्यम के द्वारा से हमें ना कहीं हमारी अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। मुझे आज भी याद है कि जब भरतलाल साहब एमडी थे जल जीवन मिशन के, उन्होंने एक ही बात कहा था कि मुझे उस दिन आनंद होगा जब ये देश के जो प्रतिष्ठित अवार्ड्स होते हैं, रत्न अवार्ड्स या कोई भी अवार्ड, वो हमारे पब्लिक इंजीनियरिंग, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग जो दिल्ली में बोलते हैं और यहाँ पे वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन बोलते हैं अपन, वहाँ पे कार्यरत रहने वाले अधिकारी वर्ग को जब ऐसा प्रकार का अवार्ड मिले तो सही मायने में इस देश में एक परिवर्तन आ रही है, ऐसा मुझे लगेगा। दूसरा जो है, आप में क्षमता बहुत है। अगर मैं यहाँ पे एक एनालिसिस करूँगा तो शायद बहुत सारे इंजीनियर्स, ग्रेजुएट्स आईआईटी से है, एनआईटी से होगा, बिट से होगा, मास्टर्स किया लोगों ने, पीएचडी किया है, रिसर्च पेपर किया है, बट कहीं ना कहीं ओवर द इयर्स एक सरकारी यंत्रणा में काम करने की वजह से जो एक उदासीनता आ जाती है, एक मोनोटोमी आ जाती है, वो मोनोटोमी कहीं ना कहीं हमारी एफिशिएंसी पे इफेक्ट करता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपका अनुभव को किस तरह से समाज के भले के लिए आप उपयोग कर सकते हैं, ये अगर विचार हमेशा आपके साथ रहा तो डेफिनेटली आप में वो जो कॉम्प्लेसेंसी आती है,
या ये जो एक सोच आती है कि मैं 30 साल से वही कर रहा हूं, उसमें एक बदल आ सकती है। सोचना आपको है, करना आपको है। आप पे एक बहुत बड़ी जवाबदारी इस देश के जो हमारी सत्ता है या जो प्रशासन है उनके तरफ से आप पे दी गई है। और जल पूर्ति के लिए निधि की भी कमी नहीं है। आज हर राज्य में यह परिस्थिति है कि केंद्र कह रहा है कि भैया हम आपको इतना पैसा देना चाहते हैं, आप खर्चा कम कर रहे हैं। 4 लाख करोड़ का आउटले ओरिजिनल बजट में जल जीवन मिशन का है, और शायद अब वो 5 लाख करोड़ हो गया होगा। उसी तरह से अमृत के अंदर में करीबन 2 से 3 लाख करोड़ का आउटले है। हर एक राज्य ने अपना अपना स्कीम्स बनाया। जैसे महाराष्ट्र में अमृत छोड़ के हम नगरोत्थान स्कीम बनाए हैं, जहां पे हम छोटे नगर परिषद को एड्रेस करना चाहते हैं। सो फंड्स इज नॉट द प्रॉब्लम। पैसे की उपलब्धता, ये जो हम घड़ी घड़ी कहते हैं कि पैसा उपलब्ध नहीं है, ये कहीं ना कहीं हम मिसगाइड करते हैं। बट एग्जीक्यूशन ऑन टाइम इज इक्वली इंपॉर्टेंट। एक प्रथा हो गई है, योजना अगर 2 साल का है तो 2 साल के 3 महीना पहले अगर योजना कंप्लीट हुई तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि ये योजना में कोई चैलेंजेस था ही नहीं। वो योजना जब तक 4 साल, 5 साल, 6 साल, 3 साल विलंब, 5 साल लेट, उसका 2 बार रिवाइज एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं होता है, तब तक वो योजना में देयर वाज समथिंग डिफिकल्ट, ये सिद्ध नहीं होगा। मैं ये कहता हूं कि क्यों नहीं हम किसी भी योजना को उसके जो टेंडर पीरियड है, वो टेंडर पीरियड के पहले वो खत्म हो और वो पूर्ण करके लोगों को दे दिया जाए। ये विचार से हम काम क्यों नहीं करते? बैक एंड प्लानिंग जो होना चाहिए, अगर आपको पता है कि किसी भी स्कीम के अंदर में ये 4 या 5 कंपोनेंट है, लैंड एक्विजिशन है, पाइपलाइन लेनी है, ESR बनाना है, या STP बनाना है, या WTP बनाना है, ये हर एक अलग अलग कंपोनेंट की प्लानिंग एक साथ क्यों नहीं हो सकती है? ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर इस योजना करना है तो यहाँ से चालू कीजिए और लास्ट तक पहुँचिए, उसके बीच में कहीं बदल नहीं करना है। खैर, आपका ये कन्वेंशन है। आज का कन्वेंशन में एक्स प्रेसिडेंट को सत्कार किया गया है, नया प्रेसिडेंट आए हैं। नया प्रेसिडेंट से आशा व्यक्त की जाएगी कन्वेंशन में आपके विचार और आपके अनुभव के आधार पर कुछ न कुछ निर्णय ठोस आप लोग लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये 2 दिन का कन्वेंशन में जो मैंने कुछ अपने प्रास्ताविक में कहा है, उस पर भी डेफिनेटली आप विचार करेंगे। एक बार फिर भुजबल साहब को उनका ये प्रेसिडेंट का पोस्ट लेने पे उनका मन से अभिनंदन, शुभेच्छा। और जो एक हमारी MS सर ने जो मुद्दा उपस्थित किया कि प्रेसिडेंटशिप से आपका MJP का कार्यभार में उसका कुछ विपरीत परिणाम न होवे, उतना ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। हमारे मंत्री महोदय जो है वो उनकी भाषण करने की एक शैली है, और मुझे उम्मीद है कि 2 प्रशासकीय अधिकारी का भाषण के बाद जब मंत्री महोदय भाषण देंगे तो वो आपको और उत्तेजित करेंगे, आपको और जो है वो यहाँ से जाने के बाद आप किस तरह से और उत्सुकता से और एनर्जी के साथ काम कर सके, ये मेरे उम्मीद है। एक बार फिर माननीय मंत्री जी आज इस कार्यक्रम में आए और आयोजक ने हम सब लोगों का सत्कार किया, उसके लिए सबका मन से आभार व्यक्त करते हुए मैं अपना 2 शब्द खत्म करता हूं और एक बार फिर आप सबको इस कन्वेंशन का शुभेच्छा देता हूं। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र। Thank you, sir, for sharing your valuable insights this morning. And now I invite our Chief Guest, Honorable Minister for Water Supply and Sanitation, Government of Maharashtra, Shri Gulabrao Patil ji, for the inaugural address. आज के प्रोग्राम को उपस्थित हमारे प्रधान सचिव श्री संजय जायसवाल जी, हमारे मजीप्रा के मेंबर सेक्रेटरी अभिषेक जी, कृष्णा जी, मजीप्रा के पूना के मुख्य अभियंता श्री राणे जी, आईवा के नए चेयरमैन और नासिक के अभियंता श्री सुभाष भुजबल जी, आईवा के पोस्ट चेयरमैन श्री प्रमोद सिन्हा सर, वाइस प्रेसिडेंट श्री माथिया जी, श्री पानसे जी, श्री प्रशांत जी भामरे,
श्री आवटे जी, विचार मंच पर बैठे सभी भाइयों और बहनों, यहाँ आए हुए सभी राज्य से तमाम शास्त्रज्ञ, अभियंता, विद्यार्थी मित्रों का मैं महाराष्ट्र का मंत्री के नाते आपका सबका स्वागत करता हूं। और आदरणीय भुजबल जी, उनको महाराष्ट्र में आईवा का जो प्रेसिडेंटशिप दिया गया उसका भी उनको बधाई देता हूं। पिछली सरकार में भी मैं स्टेट मिनिस्टर था, लेकिन जिस तरह से कृष्णा साहब ने बताया कि हमारे अभियंता को, हमारे इंजीनियर को पहचान कब हुई, तो जल जीवन मिशन से हुई। आज पूरे देश में कोई बोलबाला होगा तो जल जीवन मिशन का बोलबाला है। वैसा महाराष्ट्र में जल जीवन मिशन ये पहले बार नहीं हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज जी जब भी थे, आप उनके किले पर आप भी जाकर देखे तो आप भी छत्रपति का कुआं, छत्रपति जी ने बनाया हुआ बंधारा, छत्रपति ने बनाया हुआ तालाब आज भी मौजूद है। इतना ही नहीं तो महाराष्ट्र की ये भूमि में ऐसे भी जो लोग हैं जहां पर कंकर है, जहां पर मट्टी है, जहां पर पत्थर है लेकिन पानी नहीं है। जैसे अन्नाजी हजारे है जिसका नाम पूरा देश लेते हैं, पोपटराव जी पवार है जिन्होंने इस पर बहुत अच्छा काम किया है। और ये देश में महाराष्ट्र 1960 में जब अलग हुआ, महाराष्ट्र को स्टेट की मान्यता मिली, उस दिन से आज तक इतिहास देखा जाए तो पानी की बहुत सी योजनाएं आई, लेकिन आज हमें फक्र के साथ कहना चाहिए कि महाराष्ट्र में रेवा है, वर्धा है, कृष्णा है, कोयना है, भद्रा है, गोदावरी है। इन नदियों के बलबूते पर हम पानी पीते थे, लेकिन आज महाराष्ट्र की स्थिति आप देखेंगे तो 92% यहां पर पत्थर वाली जमीन है, 8% सिर्फ पानी है। महाराष्ट्र में सिंचाई के लिए 92% पानी यूज किया जाता है। और आज जल जीवन मिशन, इसमें काम करने वाला मैं एक कार्यकर्ता हूं। यह पानी का विषय सिर्फ भाषण और उद्घाटन के लिए नहीं है, यह समारोह के लिए नहीं है। अगर ये पानी का विचार मंथ हो जाए तो ये अमृत बन जाएगा, और ये अमृत मनुष्य जाति के लिए निश्चित रूप से वरदान बन जाएगा। भगवान की कृपा है कि जो सदियों में हम काम कर रहे हैं, जिस स्थिति में हम काम कर रहे हैं, ऐसा कहते हैं कि पानी पिलाना पुण्य का काम होता है। शायद ऊपर भी दाढ़ी वाले बाबा है और नीचे भी दाढ़ी वाले बाबा है, और आप भी हमारे सेक्रेटरी साहब, आप भी दाढ़ी वाले बाबा हो। शायद भगवान ने कुछ ऐसा लिखा होगा कि आदरणीय मोदी जी इस देश के पंतप्रधान हो गए और गुलाबराव पाटिल जैसा आदमी यहाँ का मिनिस्टर होगा, जायसवाल जी यहाँ के हमारे प्रधान जी हो गए, उनके साक्ष्य से सब अभियंता यहाँ पर जल जीवन मिशन का काम करेंगे। और मुझे फक्र है कि हमारे राज्य ने 97% वर्क ऑर्डर काम की दे दी है, 97%। भूजल संरक्षण का यहां पर बहुत अच्छा काम चल रहा है। महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो गोवा और महाराष्ट्र, भूजल के बारे में हमने पूरे तरह से हमारे राज्य का प्लान तैयार किया है।
स्रोत का प्लान तैयार किया है। 2700 स्रोत हमने यहां पर हमारे योजनाओं को मंजूर करने के बाद भी उनको ढूंढ लिया है। और आज हमें चैलेंज है कि 55 लीटर पानी हमको हर आदमी को पिलाना, हर घर जल हर घर नल। मैं तो मेरी बड़ी सभाएं में हो या गांव की सभाओं में हो बोलता हूं, मुझे लोग प्यार से लोग भाऊ बोलते हैं। मैंने बोला है कि हमें भाऊ नहीं बनना है, हमें पानी वाला बाबा बनना है। और शायद आज का ये प्रोग्राम देखकर आपके जैसे लोग जिसमें काम करते हैं, हम आपके जैसे डिग्री वाले लोग नहीं हैं, शायद हमने आपकी जैसी डिग्री नहीं ली है, लेकिन ऐसे कहते हैं कि बाजू वाला यदि आदमी होशियार के पास होशियार बैठ जाए तो वो भी होशियार हो जाता है। तो आज ये समस्या, पूरी देश की समस्या हल करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने बड़ा पहल उठाया है। इसके साथ हर घर में शौचालय होना चाहिए, गांव में सार्वजनिक शौचालय बनना चाहिए। इसके लिए भी हम अग्रसर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। भुजबल जी का मैं तहे दिल से यहां पर अभिनंदन करता हूं और कहना चाहता हूं, हजारों है मंजिल और हजारों राहें और अनगिनत है ख्वाब। जमीन की क्या बात है, मिल जाएंगे आसमान तो पानी पहुंचाएंगे आप। मुझे लगता है आप सब जमीन तो छोड़ दो, आसमान में भी पानी पहुंचा सकते हो। आज सब तरफ से जल जीवन मिशन की चर्चा हो रही है, अमृत 2 की चर्चा हो रही है, और राज्य में और केंद्र में पहली बार ऐसा हो रहा है। मैं 20 साल से विधायक हूं कि डिपार्टमेंट पैसा बोलती है कि पैसा लेके जाओ, वर्क ऑर्डर लेके जाओ, और पूछती है कि पैसा खर्चा करो, पैसा लेके जाओ। मुझे तो भी लगता है कि आज देश के लिए सभी आप हर कोने से आए हुए सब भाइयों को अच्छा काम करने के लिए भगवान की कृपा से एक बड़ा मौका मिला है। हम सब मिलकर हर घर जल हर घर नल, हर आदमी को स्वच्छ पानी देंगे, जिससे उसका आरोग्य अच्छा रहे, उसके पैसे बचे और देश के कार्य के लिए वो आगे चलते रहे। मुझे इस प्रोग्राम को बुलाया गया, मैं आपकी तरफ से आदरणीय व्यासपीठ का शुक्रिया अदा करता हूं। आदरणीय भुजबल जी को फिर से शुभकामनाएं देता हूं। शुभकामनाएं देते वक्त इतना ही कहना चाहता हूं, आईवा में तो काम करो, लेकिन जल जीवन मिशन की तरफ भी देखिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपके प्रेरणादायी शब्दों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपण जे मार्गदर्शन या ठिकाणी आज केलेलं आहे त्याबद्दल धन्यवाद. Time now for memento presentation in order to express gratitude, beginning with our chief guest, Shri Gulabrao Patil ji, Honorable Minister of Water Supply and Sanitation, Government of Maharashtra. I request Engineer Subhash Bhujbaji, Chief Engineer MJP Nashik and President IWA to please present, please kindly go ahead, a shawl, a Puneri pagdi, and a memento to our honorable chief guest. आदर और सम्मान का प्रतीक परंपरागत शॉल पहनाई जा रही है। और ये जो आप देख रहे हैं, दिस हेड गियर इज टिपिकल पुणेरी पगडी. असं म्हणतात की पुणेकर लोकांना पगडी घातल्याशिवाय पाठवत नाही कुठे. That was on a lighter note, but thank you for accepting this memento on behalf of IWA. Thank you so much. I request Dr. Dayanand Panse, Secretary General IWA, to please present the pagdi, the shawl and memento to Shri Sanjeev Jaiswal ji, Principal Secretary, WSSD, Government of Maharashtra.
a token of reverence from, thank you, Engineer Rajendra Rahane, Chief Engineer MJP Pune, will now present the pagdi, the shawl and a memento to Shri Abhishek Krishna Ji, Member Secretary MJP, Government of Maharashtra. Please accept this felicitation as a token of respect and love. Thank you. And now Engineer V.L. Kulkarni, Retired Executive Engineer MJP Pune, will felicitate Engineer Pramod Sinha ji. एक फोटो काढून द्या ना सर पहिले. जरा मोबाईल मध्ये फोटो काढून द्या ना सरांच्या मोबाईल मध्ये. A very unique moment, I'm sure. Such precious and rare visuals. Yes, thank you. आइए कुलकर्णी साहब. I now request Engineer Milind Savre to please present the felicitation. Subhash Bhujbal, Chief Executive. आइए. नहीं है का? या ना? Okay, so we have Engineer Anand Nampurkar felicitating Engineer Subhash Bhujbal ji, Chief Executive Engineer MJP Nashik, who is now the President of IWWA. Sir, memories of this convention along with this typical Puneri headgear to carry back along with you back home. And now, Engineer P.A. Kashyape, Scientist CWPRS, will felicitate Engineer Rajendra Rahane, Chief Engineer MJP Pune. Okay, we have Mr. Anil Kulkarni to felicitate Engineer Rajendra Rahane ji. And now, Engineer Rajendra Antar, Retired Executive Engineer MJP Pune, will felicitate Dr. Dayanand Panse, Secretary General IWWA. Thank you.
Engineer R.S. Chandan Shive, Assistant Superintending Engineer, will felicitate Engineer P.D. Bhamre, Superintending Engineer MJP Amravati, and Vice Chairman IWA. I will call upon Engineer P.V. Chaugule, Executive Engineer MJP Satara, to felicitate Engineer Vaishali Avte, Organizing Superintending Engineer MJP Nashik, and Secretary IWA. I call upon Engineer S.B. Bangare, Deputy Engineer, to felicitate Engineer K.V. Pate, Retired Executive Engineer MJP, and Organizing Secretary IWA. All right, and now as we move towards the by Engineer Rajendra Rahane, MJP Pune, Czech. गुड मॉर्निंग टू ऑल. मला संधी मिळाली होती, लेकिन आज का ज़माना T20 का ज़माना है. मैंने वो चांस छोड़ा नहीं, इसीलिए आपके सामने खड़ा हूँ. जिनका उल्लेख महाराष्ट्र में पानी वाला बाबा ऐसा होता है, हमारी ग्रामीण महाराष्ट्र में ऐसे हमारे आदरणीय मंत्री जी आज इस अपने आईवा की हमें किया. आप सबका और हमारे एमजीपी के ऑफिसर्स का हौसला बढ़ाया, इसीलिए मैं उनको आईवा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं. सर जहां जाते हैं वहां बाहर आती है. ऐसे हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जी आदरणीय जायसवाल सर कि सच में सर जब से हमारे डिपार्टमेंट में आए तब से पूरे डिपार्टमेंट का बदलाव उन्होंने किया. उन्होंने आपको बहुत बढ़िया मार्गदर्शन किया, जेजेएम के बारे में, अमृत 2 के बारे में, इंजीनियर्स का हौसला बढ़ाया, इंजा है समाज में वो बताया. मैं आईवा की तरफ से उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ. जिनके नाम में कृष्ण है, ऐसे हमारे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के सदस्य सचिव, और सच में ये हमारे जीवन प्राधिकरण में काम करने के लिए बहुत हर्डल्स थे, और उसे वो हर्डल्स क्लियर करने के लिए एक कृष्ण की ज़रूरत थी हमें. सर आ गए, जायसवाल सर के साथ उन्होंने भी हमें बहुत मार्गदर्शन किया, यहाँ आपको सबको मार्गदर्शन किया, इसलिए मैं उनको भी बधाई देता हूँ, उनके आभार व्यक्त करता हूँ. आईवा के जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है, उन्होंने पिछले साल आईवा का बहुत अच्छा काम किया. उन्होंने भी यहाँ आके हमें मार्गदर्शन किया, उनका भी मैं बहुत
आदरपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे सहकारी भुजबल जी जो अभी आईवा के प्रेसिडेंट बने हैं, उनको भी आगे काम करने के लिए मैं बहुत शुभेच्छा देता हूँ। भामरे जी, सब आईवा के सब मेंबर्स, उनको भी बधाई देता हूँ। आप सबको बधाई देता हूँ। आप सब बहुत संख्या की मात्रा से यहाँ आए, ये प्रोग्राम को बहुत ऊंचे स्तर पे ले गए। अभी आप सबको, पत्रकार भाई, बाकी सबको जो बिहाइंड द कर्टन काम करते हैं, वो सबको मैं पुनः एक बार बधाई देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। उद्घाटन सत्र का समापन राष्ट्रगान के साथ होगा। We will conclude this session with the national anthem. Kindly rise in its honor. May I request all of you all to rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभाशिष मागे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे, जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you. Ladies and gentlemen, the Honorable Minister will now proceed to inaugurate the exhibition, while you all can proceed for high tea that has been arranged in the adjoining area, right in this convention hall. Please reassemble in the next 15 minutes for the memorial lectures. जलपान का प्रबंध बगल वाले एरिया में किया गया है। बस एक गुजारिश है, 15 मिनट की अवधि में वापस आ जाइएगा। So it is 12:30 now, 12:30 बज रहे हैं। आप 1:45, let us try to come back by 1:45 and we will try to make up on the lost time. Thank you so much. The maximum and minimum temperature is 35.8 degrees Celsius and Indian Waterworks Association Convention 2024. Glimpses of Coimbatore as an emerging metropolis by IWWA Coimbatore Center. Coimbatore city is located in population temperature is 35.8 degrees Celsius and 22.4 degrees Celsius. Coimbatore is an educational hub of South India. The Coimbatore district is the home for 7 universities, 78 engineering colleges, 5 medical colleges, 2 dental colleges, 35 polytechnics, 150 arts and science colleges and schools. The economy of Coimbatore is heavily influenced by information technology, engineering and textiles.
Being a hub of textile industry, Coimbatore is called the Manchester of South India. It's also famous for automobile spare parts, motor pump sets and wet grinders. There are many luxury hotels ranging from 3 to 5 stars scatterly available for comfortable stay. Coimbatore has best potential in medical tourism. The city has established a strong name in the medical services from bottom most to uppermost people, not only India but also international level. Coimbatore Railway Junction is also known as Kovai Junction, is the primary railway station serving the city. It has well connected with all the major cities of the country. Most of the express trains to Kerala passing through the Coimbatore Junction. Coimbatore International Airport is the second busiest airport in Tamil Nadu. It is well connected with domestic flights almost all the major airports of our country. The Coimbatore city is connecting the various national highways and state highways, many roads passing through and originating from Coimbatore. The famous GD Car Museum is the only classic car museum of its kind in South India. It has an impressive collection of more than 100 vintage cars, each with a history of unique technology. Insect Museum into the Tamil Nadu Agricultural University is the first insect museum in India. Insects collected since the early 1900s are housed here. The museum showcases a rich diversity of insects from all over the country as never seen before. The Adiyogi Shiva statue, made up of 112 feet height, 147 feet long, 82 feet wide and with 500 ton of steels. It is recognized by the